Hello everyone, welcome to Super Kalam. I am your mentor and teacher Arpita Sharma, and today we are revising science and technology. This is going to be a revisionary class, and in science and tech we are going to revise it in two parts. The first part will deal with space technology, defense and missiles, and biotechnology. The second part is going to deal with nanotech, environment and science and technology amalgamation, India's science and technology policies and institutions. So, Abhi, right now it's 12 noon. You are revising part 1. Then at 8 p.m., you'll be revising part 2. Okay, these will be the two parts in which revision will be done. So, आज ही आपका science and tech पूरा revision complete हो जाएगा. But we are going to revise the core topics which have been frequently asked in PYQs. जो PYQs में काफी बार पूछे गए हैं, तो core topics revise करने वाले हैं हम. ठीक है, let's get started everyone. शुरू करें आज की class. Let's first start with the space technology. देखो, when we talk about space technology, UPSC has been repeating questions here. For example, when it comes to space, UPSC has been asking questions on James Webb Space Telescope, Artemis mission, right? NASA के different missions रहते हैं. Then different kind of orbits in which satellites are placed, launch vehicles. There are different kind of missions which UPSC basically asks questions on. For example, Chandrayaan 3, latest mission. Now, which kind of rocket system was used in Chandrayaan 3? LVM 3 rocket system was used. LVM 3 was a new launch vehicle which was used because इसके अंदर ना capability होती है. It has a very special power that it can place modules in geosynchronous transfer orbit, and that too in a very cost effective manner. Now the real question is that what exactly is geosynchronous orbit. सबसे पहले geosynchronous orbit समझते हैं. ठीक है, so we are going to make notes in the class itself. Make sure that you are also making the same with me. When we talk about, write it down, the geosynchronous orbit. जब हम इसकी बात करते हैं, क्या है geosynchronous orbit? It is a specific, write it down, it is a specific earth centered orbit where where these satellites where these satellites orbital period orbital period is equal to earth's sidereal sidereal day, which is approximately 23 hours 56 minutes 4 seconds. Please write it down. Earth sidereal's day is equal to 23 hours 56 minutes and 4 seconds. So where satellites orbital period, the period in which it takes to orbit, is equal to what Earth's sidereal day is, 23 hours 4 seconds 56 minute 4 seconds. ये आपको पॉइंट याद रखना है. Basically, this synchronization means that satellite appears to stay in the same position relative to the point of Earth. ओके, अर्थ का जो पॉइंट है ना, उससे रिलेटिव सैटेलाइट की पोजीशन एकदम सेम रहती है. दैट इज जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट. तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं विच यू नीड टू अंडरस्टैंड. दीज टॉपिक्स आर आस्क्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स. यही मीनिंग अगर आप समझ गए तो ये आप प्रीलिम्स में 2 नंबर का क्वेश्चन सही मार्क कर दोगे. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट. वी हैव अंडरस्टूड ऑर्बिट. ट्रांसफर ऑर्बिट क्या होता है, तो उसका नोट हम यहां बनाने वाले हैं. Geosynchronous transfer orbit. What exactly is it? Write it down. It is an elliptical orbit which is used to move satellites from lower orbit that is like the low earth orbit to higher orbit. Higher orbit means geosynchronous orbit. तो जियो लोअर अर्थ ऑर्बिट से जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में जब सैटेलाइट्स को मूव किया जाता है, उस एलिप्टिकल ऑर्बिट को हम जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट बोलते हैं, बिकॉज यू आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम लो अर्थ ऑर्बिट टू जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट. ओके, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ट्रांसफर ऑर्बिट. ये पॉइंट्स क्लियर हो गए आपको. दिस टू डेफिनेशन एंड दीज टू डिस्टिंक्शंस शुड बी वेरी मच क्लियर. Now, what is the objective of Chandrayaan? Yan means vehicle, Chandra means moon. That means objective is lunar landing, soft landing on lunar surface, so that experiments can be done on soft side of moon. Then we have Gaganyaan. Gagan means sky, Yan means again vehicle. So what exactly is Gaganyaan? Basically यहाँ पर unmanned flights 2 भेजी जाएंगी.
एंड एक ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट भेजा जाएगा. 3 flights will be sent into the orbit. Now when we talk about Gaganyaan mission, it is also the first human space flight program of ISRO, and it also shows indigenous capability of human space flight to low earth orbit. तो यहाँ पर अगेन लो अर्थ ऑर्बिट ये ब्रैकेट में लिख लो ताकि याद रहे आप लोगों को. ठीक है. देन वी हैव आदित्य L1. आदित्य मीन्स सन. तो इससे ना नाम से ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाते हैं. टू स्टडी सन, राइट. सो आदित्य L1 मिशन इज फर्स्ट डेडिकेटेड स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी लॉन्च्ड बाय इसरो. कब लॉन्च हुआ था? 2023, सितंबर टू 2023. एंड द एम वाज टू study the sun's corona, chromosphere and photosphere as well as solar wind and space weather. And remember that solar wind के ऊपर ना questions पूछे गए हैं prelims में. solar flare के ऊपर question पूछे गए हैं. So you have to prepare them. Okay. So to study the sun's atmosphere, this particular mission has been launched. To understand solar wind, its composition, this mission has been launched. And it is basically using advanced solar physics research. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. ओके. देन वी हैव एक्सपोसैट. नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मेनी स्टूडेंट्स मिस दिस आउट इन देयर प्रिपरेशन. एक्सपोसैट इज, मैं इसका फुल फॉर्म लिख देती हूँ सो दैट आप भूलो नहीं. ठीक है. इट इज एक्स रे polarimeter satellite. It is India's first dedicated mission to study the X-ray polarization from bright celestial sources. बेसिकली इसका मिशन ये है कि एमिशन मैकेनिज्म जो होता है ना उसको समझा जाए by analyzing the degree and direction of polarization. Okay, so it will be helpful in studying black holes, neutron stars, etc. जो भी एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको स्टडी करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है. Okay, so again this is very important. This is to study X-ray polarization in the medium X-ray energy band. That is why X word is over here. It will help you understand radiation mechanism, how radiation works. रेडिएशन मैकेनिज्म को समझने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है. ठीक है. द ज्योमेट्री ऑफ सेलेस्टियल सोर्सेज, टू अंडरस्टैंड दैट इट हैज बीन लॉन्च्ड. ओके. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिफिक मिशन है दैट यू शुड रिमेंबर. सो नाउ लेट्स मूव अहेड. आगे बढ़ते हैं. आर्टेमिस मिशन. नाउ अगेन आर्टेमिस मिशन सीडीएस के पेपर में भी क्वेश्चन पूछा गया है इसके ऊपर. ठीक है. प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ चुका है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. व्हेन वी टॉक अबाउट आर्टेमिस मिशन, आर्टेमिस से ही रिलेटेड ना एक अकॉर्ड भी है, आर्टेमिस अकॉर्ड. So you have to remember that also. Now this Artemis mission basically is a lunar mission. ये एक lunar mission है. Please write it down. Okay, it is a lunar mission. And another important point is why it is in news. Why we are studying it? Because NASA, write it down. NASA identified potential landings. Write it down. Potential landing regions where near the south pole of moon for the Artemis mission. The next Artemis mission, that is Artemis 3. वैसे total 4 Artemis missions हैं जो launch किए जाएंगे. And it's a lunar mission basically to establish first long term presence on the moon. ओके. अपोलो 17 के बाद फिर से मून पे अपने ह्यूमन प्रेजेंस को रीस्टैब्लिश करने के लिए नासा ने ये मिशन लॉन्च किया है. ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. इसमें ना आपको एक पॉइंट याद रखना है अबाउट दी ओरायन स्पेसक्राफ्ट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज राइट इट डाउन. ओरायन स्पेसक्राफ्ट. ओरायन इज नासा स्पेसक्राफ्ट दैट विल टेक ह्यूमंस इनटू डीप स्पेस. ओके. पार्शियली रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट रहेगा ये, जो आर्टेमिस मिशन में भी, प्रोग्राम में भी यूज किया गया है. एंड इसी के अंदर ना एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. राइट इट डाउन. विच इज the space launch system rocket, which is known as SLS rocket also. What is it? It is a super heavy lift expendable launch vehicle which is developed by NASA. Okay, it can be launched only once. That is why it is super heavy lift expendable launch vehicle. एक ही बार इसको लॉन्च किया जा सकता है. ठीक है. जब ये री एंटर करता है स्पेस से अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर में, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है. सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट. Okay, then we have seen UPSC asking question on the largest and most powerful telescope, which is the James Webb Space Telescope. Basically infrared observations के लिए इस telescope को बनाया गया, लॉन्च किया गया. Okay.
Now let's move ahead. Now always remember, UPSC asks questions of on types of satellites. ये बहुत important है, because satellites are what? They are objects that revolve around any celestial body larger than their size, right? And these satellites can be either natural or it can be artificial also. Now when we talk about artificial satellites, they are placed into various types of orbits. इनको अलग अलग orbits में डाला जाता है, ठीक है? So हम अलग अलग satellites पढ़ेंगे, and we'll be studying the orbits also into which they are placed. But the most important aspect is that why satellites are used, and what are the different kind of components of satellites. देखो satellites जब भी launch किए जाते हैं ना, there are power sources of satellites. Solar power panels are used so that they can meet their running requirement, and there are transponders with the satellites. Transponders भी भेजे जाते हैं. What are transponders? To transmit and receive the energy. Then there is guidance and stabilization sensors, thrusters, maneuvers जो satellites में लगाए जाते हैं. Now satellites are of different types. For example, we have communication satellite. For telecommunication, broadcasting purposes, these satellites are used. But what are the orbits into which these satellites are placed? We have geostationary, write it down, geostationary earth orbit. Earth orbit. Okay, basically communication satellites, they are placed in geostationary earth orbit to be used for telecommunication purpose. ठीक है, इसका काफी इंपॉर्टेंट एडवांटेज रहता है. व्हाट आर द एडवांटेजेस? बिकॉज दिस ऑर्बिट हैज स्टेबल बैंडविथ. राइट इट डाउन. इट हैज स्टेबल bandwidth. That is how telecommunication activities can be taken place, right? जैसे कि इसरो का GSAT सीरीज था, उसको जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में ही डाला गया था. ठीक है. नाउ डिसएडवांटेज ये रहता है कि हाई लेटेंसी रहती है इसकी. देन देयर सेकंड ऑर्बिट into which they are placed, which is known as low earth orbit. Low earth orbit. Now low earth orbit में ना, there is, it offers increased bandwidth. यहाँ पर जो बैंडविथ होती है वो हाई रहती है, नॉट स्टेबल, हाई बैंडविथ. हाई बैंडविथ. ओके. और यहाँ पर लेटेंसी भी कम रहती है, जो लैग होता है वो भी कम रहता है. ठीक है. दैट मीन्स इट इंश्योर्स फास्टर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा. सो इट्स अ नेचुरल चॉइस. फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ स्टारलिंक प्रोजेक्ट ऑफ स्पेस एक्स दैट इज पुट इन टू द लो अर्थ ऑर्बिट ओनली. ओके. देन आगे बढ़ते हैं. वी हैव अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट. नाउ दीज आर polar. Write it down. These are polar orbiting and low inclination satellites. These are used for long term observations of atmosphere, of biosphere, of lithosphere, of oceans. I hope that you have noted this down. Okay, so to monitor our planet from space, these satellites are used. That is why the name is Earth Observation Satellite. And what are the orbits into which Earth Observation Satellites are placed? देखो, एक होता है, write it down, the synchronous subrecurrent orbit. Okay, it is a combination of sun synchronous orbit and subrecurrent orbit. इसी के अंदर आ जाता है, write it down, sun synchronous orbit. What is sun synchronous orbit? It is, write it down, the angle between an orbit plane and the sun seen from the earth. It is always constant at the same local solar time. That is sun synchronous orbit. Then we have subrecurrent orbit. इसी के अंदर second आ जाता है, write it down, subrecurrent orbit. What is subrecurrent orbit? ये क्या होता है? Write it down. Flying at same local solar time and same location at fixed period. That is subrecurrent orbit. ठीक है. ये पोलर रीजन्स में, नॉर्थ साउथ के बीच में जो एक ऑर्बिट चक्कर लगेगा वो फर्स्ट साइकिल कहलाया जाएगा. द सैटेलाइट गो अराउंड द अर्थ सेवरल टाइम्स अ डे एंड आफ्टर अ फ्यू डेज इट passes थ्रू द सेम एरिया एट अबाउट द सेम टाइम. दैट इज सब रिकरेंट ऑर्बिट. इट इज रिकरिंग. ओके.
देन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स के यूजेस क्या हो जाएंगे? फॉर रिमोट सेंसिंग पर्पस सैटेलाइट्स आर प्लेस्ड, दी सैटेलाइट्स विच आर मेड आर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। जीआईएस के बारे में आपने सुना होगा, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम सैटेलाइट्स, दीज काइंड ऑफ सैटेलाइट्स आर आल्सो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स। ओके, कार्टोसैट सीरीज के बारे में सुना था आप लोगों ने? सो कार्टोसैट सीरीज based satellites are fall under the category of earth observation satellite only. Okay, then we have navigational satellites to navigate। जैसे कि मैं इसका यूसेज बताती हूँ, आपने सुना होगा अबाउट जीपीएस, these are navigational satellite। then galileo made by Europe, GLONASS made by Russia। okay, these are part of navigational satellite only। and navigational satellites की अगर हम बात करें, there are different orbits। for example, we have, write it down, medium earth orbit, medium earth orbit। okay, the GPS are placed in medium earth orbit। then we have geostationary, geostationary, and we have geosynchronous, geosynchronous orbits in which these satellites are placed। for example, navic की अगर हम बात करते हैं, it is placed in geostationary and geosynchronous orbits। okay, तो ये important हो जाता है आपका। now we have astronomical satellites to investigate different kinds of celestial bodies। okay, for example, james webb space telescope। ठीक है, तो ये सब parts हो जाएंगे। बायो सैटेलाइट भी होता है वैसे, in astronomical satellite we have bio satellites also। so this is again important, ये भी आपका important हो जाता है, right? तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? we have studied types of satellites, we have studied different orbits, we have studied different kind of missions and or the missions and programs that ISRO and NASA have launched। तो हमने space technology cover कर लिया। Now when we talk about defense and missiles, you have to remember this, ये हमें current affairs में, you have the current affair magazines with you, I'll show you। so when you go to सुपर कलाम, जब आप सुपर कलाम पर जाते हो तो यहाँ पर एक तो आप डेली अपना न्यूज़पेपर यहाँ से रिवाइज कर सकते हो। to my library at सुपर कलाम, and here you will get monthly current affair magazines। तो यहाँ पर different monthly current affair magazines are there, so you can revise all the defense related missiles which were in news through these magazine। इन magazines के थ्रू आप अपनी revision complete कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पर जिनोम इंडिया प्रोजेक्ट, निसार मिशन, KM3 net project, space, the SPARDEX mission, then HMPV। तो all these important topics every month we have covered in science and technology। try to revise it, आज बैठ कर ना revise करना ही करना। we have biotechnology। now this is important, biotechnology से every year ना 8 marker questions are getting asked। ये 8 मार्क का आराम से टॉपिक बन जाता है आपका। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद डीएनए वैक्सीन। ठीक है, now what exactly is a DNA vaccine? When we talk about DNA vaccine, they are known as third generation vaccine। why? Because they use engineered DNA। it is a type of vaccine that uses very small, it uses small circular, write it down, circular piece of DNA। DNA means इसको plasmid बोलते हैं। why it uses DNA? to deliver genetic instructions to body cells। जो आपकी body के cells है उनमें genetic instructions भेजा जाता है, and these instructions code for a specific antigen, usually a protein। what is antigen? चलो मैं ये भी लिख देती हूँ ताकि आप लोग डरो नहीं। ठीक है, what exactly is antigen? let us revise। it is a protein, it is a protein which is found on the surface of a pathogen like virus, bacteria। how does it work? first, DNA plasmid is injected, DNA plasmid, the vaccine is injected into the body, often into the muscle। okay, जैसे आपके हाथ में इंजेक्शन लगाया गया। then the cells take up the DNA, cells take up the DNA to begin using it to produce the antigen protein, and then immune system recognizes this foreign protein, mounts an immune response and remembers it for future protection। आगे जाके कोई वायरस या वैसा बैक्टीरिया आया तो your body will remember and try to solve the problem or attack it accordingly। so what is the advantage of DNA vaccine? it is stable, it is easy to produce,
बिकॉज कोई लाइव पैथोजन यूज नहीं होता तो इन्फेक्शन का रिस्क भी कम रहता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज आर एम आर एन ए वैक्सीन? देन वी हैव अंडरस्टूड डीएनए वैक्सीन एंड डिफरेंस ही तो पूछा जाता है, डिफरेंस इज आस्क्ड. So mRNA vaccine is also important, specifically after COVID na these kind of vaccines have been in news a lot, awareness बढ़ गई है, पहले भी था obviously but COVID के बाद more and more people have started knowing about it. So mRNA vaccine is a type of vaccine that uses, M means messenger, it means messenger, it uses messenger RNA to instruct the body, to instruct your body's cell to produce a specific antigen. Usually it is a viral protein. Viral protein. Okay. This trains the immune system to recognize and fight the real virus if it enters the body. तो इसमें mRNA को इंजेक्ट किया जाता है. Okay. So the vaccine delivers synthetic mRNA. Then protein production happens. Body cells read the mRNA and make the antigen. Then immune activation happens. The immune system detects the protein as foreign, creates antibodies and activates the T cells. ओके तो आपकी बॉडी याद रखती है, दोनों केसेस में सेम ही ऑब्जेक्टिव है. ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है. बट इट इज फास्टर टू डेवलप. ओके, हाईली इफेक्टिव माना जाता है mRNA वैक्सीन. सो वी हैव अंडरस्टूड द बेसिक्स, दोनों की हमने रिवीजन कर लिया. Now the next important topic from which repeatedly UPSC has asked questions, ये आपके repeated PYQs से निकाले गए हैं टॉपिक, repeated topics in PYQs. CRISPR Cas9 ये तो 3-4 बार रिपीट हुआ है प्रीलिम्स में since 2020. Gene therapy and genome sequencing. Now let's first understand genome sequencing. It is like, write it down, reading the complete instruction manual of a living organism, of a living organism. ओके, चलो यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ. ओके, इमेजिन योर बॉडी, दिस इज योर बॉडी एंड लेट्स से इट इज अ जायंट मशीन, it is a giant machine. Okay, then let's say this is DNA will be like an instruction book of this giant machine. इसकी instruction book है. ठीक है, and it is written in specific 4-letter code. What is that specific 4-letter code? ATCG. इस कोड में इस किताब को लिखा गया है. So genome sequencing will means, write it down, genome sequencing means reading all these letters in order from the beginning to the end, so that scientists know what instructions are there to build and run your body. Okay, अब समझ आए जीनोम सिक्वेंसिंग क्या? इन द मोस्ट easiest and simple manner I have explained it to you. So basically it is very useful to understand, or you can say to study, to understand genetic diseases. Okay, to know how viruses change over time, to develop personalized medicine. Genome sequencing helps a lot. Okay, now let us understand what is gene therapy. Okay, so basically gene therapy, write it down, is a medical technique. It is a medical technique where the doctors fix or replace a faulty gene in your body to treat or to prevent any kind of disease. Okay, अब इसका एक सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ. थ्रू एन एग्जाम्पल वील अंडरस्टैंड. इमेजिन अ जीन इज लाइक अ कोड इन योर बॉडीज सॉफ्टवेयर. आपके बॉडी का ये बॉडी है, दिस इज योर बॉडी एंड दिस इज अ काइंड ऑफ कोड इन योर बॉडी सॉफ्टवेयर. नाउ लेट्स से इफ देर इज अ बग, that means if there is a mutation in this code, इस कोड में कोई भी म्यूटेशन, कोई भी बदलाव, चेंज या बग आता है, your body will not function properly, right? So what is gene therapy? Fixing this bug. So what will it do? It will replace the faulty gene with the healthy gene. Then it will inactivate a bad gene that is causing trouble in your body, and it will add a new gene to help the body fight a disease. So replacing
inactivating, adding. This is the function of gene therapy. And CRISPR Cas9 is a tool in gene therapy. ये इसका ही टूल है. जैसे there are different kind of eye disease, different kinds of cancers, cystic fibrosis, muscular dystrophy, जो जीन डिसऑर्डर्स होते हैं जिसके अंदर जीन थेरेपी यूज की जाती है. Okay, so now you can understand what exactly is gene therapy and how CRISPR Cas9 works. I hope मैंने simple manner में ये revise करवा दिया हो आपको. ठीक है. So we'll be revising the further topics in the next class. Why? Because there are certain defense exercises that you need to revise. आज आपको defense and missiles अच्छे से revise करना है through current affair magazines that I showed you free of cost है. Revise it so that at 8 p.m. when we'll have further class on biotechnology and the remaining class, आप वहां पर fully prepared आओ, आपको सब कुछ नया नया ना लगे. Right? Today at around 5 p.m. there will be a test on the topics that we have covered so far. So make sure that you revise it nicely.